He's slightly autistic as well, but he's the best student that we have. ये अल्लाह की कुदरत है कि देखें बीमारी क्या है and the result what he's shown. ये अल्लाह ताला काम करने वाला, he works in very mysterious ways. ये अल्लाह ताला की रहमत है. So मोहम्मद इब्राहिम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. If I could call upon the mic for reciting now, Muhammad Rajab Ali, ये हमारे चेयरमैन हाजी गुलाम रसूल साहिब के ये होते हैं या वासे कह लें, तो ये उनकी भी याद में हम यहाँ बैठे हैं. अल्लाह ताला हाजी साहब की कब्र में करोड़ रहमत फरमाए. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सब ईदें मनाओ हजूर आ गए हैं. उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाऊं हजूर आ गए हैं. 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 अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया. अरे कुछ खलाओ अरे बादशाहो निगाहें झुकाओ हजूर आ गए हैं. हुआ चार सू रहमतों का बसीरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा. हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हजूर आ गए हैं. फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सब ईदें मनाओ हजूर आ गए हैं. 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 If I could call upon the mic, Ayam Sehri, and Zainul Zan, they will come and deliver a speech in regards to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये छोटे बच्चे हैं जो सरकार की बारगाह में दिलरुई थोड़ी सी तकरीर करेंगे 2 मिनट के लिए. अल्लाह ताला के हाथ में कबूल फरमाए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, dear friends and elders. Today I feel honored and blessed to stand before you and say a few words about a very special occasion. Milad un-Nabi, the blessed day when our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, was born.
This teaching is not just this day is not just a celebration of birth. It is a reminder of the beautiful life, character, and teaching of the last prophet of Islam, Hazrat Muhammad, peace be upon him. Why is this day important? The Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in Makkah on the 12th of Rabi al-Awwal in the year 570. His life was full of kindness, honesty, and mercy, and love for all of humanity. Even before he became a prophet, people called him Al-Amin, the trustworthy, because he always spoke the truth and treated people with respect. MashaAllah, MashaAllah. His message. The Prophet Muhammad ﷺ taught us to always believe in one God, Allah, to always speak the truth, to be kind to others, even those who are not unkind to us, to help the poor and needy, and to treat our parents and elders with love and respect. He showed us how to be the best human beings, and his life is the perfect example for us to follow. How should we celebrate? Some people think celebration only means decorations, sweets and parties, but the best way to celebrate Milad al-Nabi is by learning about the Prophet's life and character, reciting Durood Sharif upon him, doing good deeds like helping others and being honest and respectful, and most importantly, trying to live by his teachings. MashaAllah, MashaAllah. माशाल्लाह ये तकरीर मैंने इनको तैयार कराई थी थोड़ी सी तो अल्लाह ताला इन बच्चों में भी हुजूर सल्लल्लाहु की मोहब्बत पैदा फरमाए that these children are able to love the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now I've got two more tilawats left from our madrasa. If I could call upon Hafiz Hassan Shadad to come and recite the Quran, and then Hafiz Abu Bakr, uske baad फिर we'll go towards our Naat Rasul Maqbool. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. MashaAllah. माशाल्लाह ये थे हमारा हाफिज हसन इस माशाल्लाह इसके तकरीबन 5 पारे हो गए तो अल्लाह ताला इसको मुकम्मल हाफिज कुरान बनाए. Lastly, if I could call upon the mic हाफिज Muhammad Abu Bakr, inshallah in the next 2 weeks ये मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाएगा इंशाअल्लाह. ये इस मस्जिद का दूसरा हाफिज कुरान है तो अल्लाह ताला इसको मुकम्मल हाफिज कुरान बनाए, बाअमल हाफिज कुरान बनाए. आमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله
متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तिलावत की और उन्होंने उसमें दुआ भी पढ़ी कि रब ताला मेरी रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन रब्बाना वबासिम आयत हमने पढ़ी थी कि या अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना। Oh Allah, make my children the coldness to my eyes। तो दुआ अल्लाह ताला से कबूल और मंजूर फरमाए कि हमारी आने वाली नस्ल क़यामत तक अल्लाह ताला उनको दीन के साथ वाबस्ता फरमाए, आमीन। अब नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाकिस्तान से आए मोहम्मद अली रज़ा रियाज साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाए।